honored to. I really feel honored to speak on this stage. It's a esteemed stage, I know, and to start with, without wasting time, because we are already 10 minutes behind the schedule, partially due to me also, and I apologize deeply for it, because I was supposed to go to the home and join on my uh, on my PC, but but I had an acute stroke case, and I could not avoid this case. Uh, there was no other person in the department, no senior neurologist in the department, so I had to like formalize this case, and I have to wait back here. So without wasting time, so is it's an informal kind of meeting, and informal this. So first I would like to start. What is important as a neurologist? What is important to understand about the brain and how to keep our brain healthy? So first thing, the most important thing about the brain, and disease related to brain, is brain stroke. Just now I faced a case, just I encountered a case where the patient had an acute stroke, and that's the reason that I was not able to go back to home. So what is stroke? So stroke is basically a brain attack. So by brain attack, every one of us would know about the heart attack. So every one of us know that, yeah, heart attack is something where actually there are blockages in the vessels of the heart, and due to that there is uh, perfusion of the heart is decreased. So in the same way, if there is a so what happens actually in cardiology when we know about the heart attack? So what happens suddenly? The blood, some major amount of blood, there is cessation of the blood flow to some part of the heart, so that that part actually becomes dysfunctional, and due to that there is some dysfunction in the myocardium, and uh, 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 maybe other parts of the heart also, and the heart you know uh, stops working properly. In the same way, if there is some damage to the brain, any part of the brain, so that's called brain stroke. So how it can be damaged? So there are two ways. One is that the artery which goes to the brain, it ruptures. So it's just like a pipe is supplying some water to a garden. That pipe actually ruptures. So what will happen? That water will not go properly into the garden. It will actually splay. Water will splay. So what happens is the brain. So there is artery which is just like a tree. The vessels are branching like tree, and some vessel actually ruptures, and so there is extra vessation of the blood into the brain parenchyma, and due to that, due to pressure effect, because there are millions of neurons surrounding that blood that is oozing out, so that actually gives pressure on the surrounding tissues, and it damages the tissues, and that's the reason that patients have symptoms. Next thing is that if this artery has a clot inside it, so the blood cannot reach the brain. So this artery, so one is that it ruptures. Second is that in this artery there is a clot, so the blood doesn't go to the brain. So what happens actually when the blood doesn't go to the brain? So brain, that tissue is damaged, because blood supplies, like oxygenated blood gives oxygen to the brain and oxygen to the tissues actually. And for that reason, what happens is uh, um, that there is damage to the tissue, to the brain tissue, and resulting into brain damage. Why I've just started about this topic? Because I never thought that I would talk this thing actually today. I thought I will talk different things, but why it is important? When I'm talking about brain health, diseases related to brain, I definitely should highlight about stroke, because stroke education we are trying to give to the mass. We are going to villages also for educating people. I take out time on Sundays and all, and I go to I go for camps and all, and we educate people. Though I'm very busy with my patients, I'm totally overloaded, but then still I try to educate people, because stroke education is the cornerstone to treatment of stroke. Because if you can, like the one
one thing is primary prevention. So if you can prevent the stroke, so I will come to that later. But if once a stroke has happened, so as soon as we try like start the treatment, so what we should do? So the most important thing is there. Suppose about the heart, we know that yes, someone can take a sublingual nitroglycerin. Everyone knows कि जीभ के नीचे nitroglycerin रख लेना है तो उससे जो है heart attack अगर आने वाला है वो कम जाएगा. But we do not have any medication here like that because of the different mechanisms actually. So one mechanism is where the blood vessel ruptures. Another mechanism is where the blood doesn't reach the brain. Suppose if we there is a myth in the community that बहुत blood pressure बढ़ गया है और थोड़ा आवाज लड़खड़ा गई है तो इसको क्या है इसको blood pressure को कम कर दो. But what happens जब ये clot इस artery में हो जाता है, so when there is a clot in the artery, so the heart tries to push hard the blood to the brain. So in that process the blood pressure increases. So that's actually a compensatory mechanism. So that's a compensatory mechanism of the body to restore the blood flow to the brain. But like it's in the case of when there is clot in the artery. But if the artery has ruptured, so it's totally opposite case. So in that case, what we have to do, we have to decrease the blood pressure. So there are two kinds of stroke. One is where there is clot in the artery and the blood is not reaching the brain. Another is where the artery has ruptured and there is some blood that has extravasated into the brain and is causing tissue damage due to pressure effect. In that case where there is rupture of the artery and there is pressure effect, we need to lower down the blood pressure and we need to give other drugs like anti-edema measures, things like that. But where we have like clot in the artery, we need to open that clot. So now there is a time window for it. So if you open that after maybe 9 hours, after maybe 10 hours, we are not going to benefit the patient. For example, if you have a string and you are tying on this finger, on the base of this finger, so you are tying very tightly. So what happens? The blood will not flow. So gradually what will happen? It will become red, then it will become black, and after some times it will become necrose. So this tissue will be dead. If you open this within time frame, maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, so this tissue will be restored. If you open it after 10 days, it's already dead. Even if you are opening it, there is no benefit. So in the same way, brain, like it has some time window is there. So that time window is 3 hours, max to max 4.5 hours. If you are going to do some interventions by some wire and all, so that may go up to maybe 6 hours, sometimes 9 hours also. But then those things are more under like those things are one that is tough also, and second it's more research and research based also. But if there's a large clot in a proximal vessel, definitely you need to go with the wire and plug down the clot. But you need not decrease the blood pressure. This is a biggest mistake actually. Once the blood pressure increases, even physicians in periphery and like who are not that much educated, so we are educating the physicians also, so they rapidly decrease down the blood pressure. And what happens due to that? Even the blood flow that was like the body was trying to restore that blood to the brain, so that also further decreases and resulting into further decrease in blood flow. That increases the stroke area, stroke volume, increases the stroke volume, and due to that there is like infarct. So infarct is actually a dead tissue. So if there is no oxygen supply to that part of the brain, that part is infarcted. So like myocardial infarction is MI, heart attack. So brain infarction is a stroke. So what is important is time. So there is a mnemonic FAST: face, arm, speech, and time. So how you should identify that one patient may have a stroke? Facial deviation will be there. So face deviates like this. So there will be slurring of speech. Speech is slurred. And then there will be arm weakness. But then this is just a generalization, but a patient may have very varied symptoms, like patient may have diminution in vision, because this brain actually, there are different parts and different parts of the brain are responsible for different activities. Suppose someone is looking to, like I'm looking to the screen, so my occipital lobe is very active, and I am and suppose I'm speaking, so my
left frontal lobe is active. Suppose I am just doing a fist like this. So there is some part of the brain, the motor cortex, that is active. So whatever part of the brain gets ischemic or is infarcted, the symptoms results due to that. So if there is a left frontal lobe, this thing where my hand area is there, so my hand will be weak. If there is occipital lobe infarct, then there may be diminution of vision. If there is some part where like emotions are there, like cognition is there, so patient may have like things like altered behavior. Patient may have things like altered speech. Patient may have like alteration in the field of vision. So things like that. So patient may have actually sensory findings also. Apart from weakness, patient may have chinchinahat or tingling numbness on the one half of the body, things like that. That may be also there. But if at all it's there, acute onset, you should definitely rush to your nearest hospital where a neurologist is there, who will diagnose this stroke on basis of a CT scan or MRI and start the treatment. What is important that you should definitely understand this: time is brain. So every minute we lose millions and millions of neurons, and once that is lost, we cannot get that back. So as soon as we understand that yes, this may be a case of stroke, you should rush to the hospital, and then we should definitely, where the doctor will do, like neurologist or neurosurgeon, whatever, they will do the tests when they the MRI and the CT scan, whatever is required, and according to that we have to act. Now, coming on to prevention, how should we prevent these strokes? So, this topic and brain healthy, this is actually one of the same topic, just maybe like a similar topic, I may say. So, keeping our brain healthy is same as keeping our body healthy. So we should do lots and lots of exercises, whatever we can. Although it's better said than done. Like I mean, I should not say that because I am also very lazy person, and I'm not able to do that much which is required. Second thing is that we should eat good food, healthy food, nutritious vegetables, fruits, things like that. And we should avoid things like where there is more of oil, carbohydrate, things like that. We should restrict that. Although again, all said then better said than done. It's very easy to say and very tough to do. I know that. Um, what is important? What is also important is when you are talking about a healthy brain, it also encompasses the psychological aspect. So as far as our Ramakrishna mission Vidyapith is concerned, we have been taught about uh, you know things like chanting, things like music, and things like meditation. So these things help brain a lot. What is important in this world? Suppose I am sitting here, so I am doing multitasking. I have a screen over here in the front. You can see there is a screen where I'm able to see whatever is happening in the center, who is doing what. So I'm doing a multitasking. I'm also seeing on this screen. I'm seeing on this screen someone is telling. So I'm just stopping him. So I'm doing kind of multitasking. This actually is not a good thing. This is bad for the brain. Someone, if he does the multitasking, वो कहते हैं कि बहुत तेज आदमी है, बहुत होशियारी है, but then actually that affects the brain. Multitasking is not a good thing. What is important is going to self. जो हम लोग बात करते हैं, आत्मन और ये सब की बात होती है, तो हम लोग तो हंसते थे उस पे, बात मजे मजे लेते थे, हम लोग बहुत मजाक करते थे उस बात पे. But now when I go into deep these things, then I understand that yes, these things are very important. Doing meditation, doing yoga, doing these kind of chanting, जो हम लोग वैदिक चैंटिंग करते थे कभी कभी, आई डोंट नो अब होता है कि नहीं. आई यूज्ड टू डू दैट एक्चुअली. दैट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वो जो उसकी जो नोट्स होती है वो ऊपर नीचे नोट्स होते रहती है, एंड वी रीड, थोड़ा हमारा आई कंसंट्रेशन होता है, हम उसको वोकल कॉर्ड, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. उसके अलावा हमने कहा कि हम लोग म्यूजिक हेल्प्स अ लॉट. म्यूजिक थेरेपी इज अ वेरी बिग थिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. आई वाज देयर फॉर अराउंड मे बी 15 days. I was there in October. I was there, and there every hospital has a music therapist. Music therapy department is there. Music therapy helps a lot in these kind of disorders. Other than that, we have
We have, I already told about exercise. I already told about, and one thing also, de-stressing, because if you are in stress, how to de-stress yourselves. So actually, de-stressing is an art actually. If suppose I am stressed now because I was not able to go to the home. I know that I have to join this Zoom meeting, but then I have found out some way how to join, how to do this. So I told my this person to get a laptop. This laptop was also not configured, so I did this configuration because my laptop is also out of order. So I have given that yesterday. So I would have like been panicky that how would I able to join and try calling you people, that I'll try by mobile, things like that. But then I thought that yes, I have a way out. So it's actually about how do you take things actually. So stress, pressure, these things will be definitely there in your lives, and every one of us faces these kind of things. But then how you take that. So your personality, you have to change your personality, and personality can be well changed. Someone comes down and tells to me that, see, I have this personality, so we cannot change it. No, that's wrong. Personality can definitely be changed with time, with your efforts, and your environment also. So you need to have a good environment. Environment is very important as far as brain health is concerned. So you should have a good environment, you should have good relations. So when you talk about the amygdala, that's the emotional part of the brain. So as long as your emotions are controlled, your emotions are okay, you have good emotions about people around you, about your colleagues, your family members, your spouse, your children. So unless until you have these kind of good thoughts, your brain cannot be healthy. uh, so this is about a healthy brain, a healthy mind, and also about uh, some a major disease of the brain, that is stroke. I took this topic because I had just a brain stroke case, and we keep educating people on brain stroke. I keep on educating. Even I go to some peripheral areas and try to, with placards and nukkad natak, things like that. We try to educate, because this is some area where people are not educated that much. Everyone understands about heart attack and things like that, heart block. But brain stroke is something that we really still we struggle to educate people, to make people understand that there's this different thing. We need to act very fast, things like that. Before I go further, I'd like greet all my seniors. Uh, uh, my respect to all seniors who are there. I don't know who people are there. I can see and my love to my all juniors who are there. Pushpendra is there. Pushpendra was my junior. Pushpendra, I don't know he's there or not. Yes, sir. Good evening. And सुन रहे हैं Sandeep Dai भैया. is there. Sandeep Dai is there. I can see. Pushpendra, your video is not visible. Sandeep Dai is walking. Maybe in this cold Ranchi, he's like. It's wonderful to hear you, Ujjawal. So I've moved on somewhere, but still managed to log in. Thank you so much. No, it's really pleasure to see Sandeep Dai and Pushpendra and other people also. Uh, I think 30 minutes already I have talked. Maybe not 20, 30, 25 minutes I have talked. 20, 25 minutes, I don't know. So I think now we should open this thing, and whatever you say, if you have questions, if you have farmaish, things like that, I mean, we can definitely take that. And Ritesh Da is also there out of his busy schedule. Thank you, Dada. Thank you very much. Yeah. So if someone has any questions, any farmaish, we can take that. Hello, Dada. Yeah. Dada, I'm from 2001 metric batch, Cancer Okay. 2001 batch. Yeah, we are Uh, yeah. yeah, Dada, this question is personally for you. I just want to ask you, we all know you are a very good singer. So I just want to ask you what you personally try to do to unwind yourself or for your brain health. What do you personally like to do? Yeah, that's a What very is good your question. choice? Yeah. So I'd like to elaborate this thing. So uh, suppose for me, music is like Vidyapit music,
we used to sing songs of some bhajans. We have been listening Muhammad Rafi, Kishore Kumar, and things like that. So definitely this is good for me. So this music therapy or keeping our brain healthy by music, so that actually depends on person to person. Suppose some person actually likes some rock music, so it may be a brain tonic for that person also. And about de-stressing, I believe me that when I go back to my home, like it's sometimes 10 o'clock, sometimes it's 11, but then still I sit down with my harmonium and I start playing that. And believe me, I get lots of energy from that. I have a good sleep also when I practice a bit. And then when I get up in the morning, I'm fresh. I'm really ready to take. Just one second, I have to take this phone because there is some that patient is there who is having brain stroke. Just one second, sir. विक्रमजीत भैया कुछ बोलिएगा, खाली हंस रहे हैं। Vikramjit, you're on mute. पहचाने कि नहीं? अभी भी आप वैसे ही हंसते हैं जैसे पहले हंसते थे। तो यही चीज है एक्चुअली कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ घर, वहां से जाता हूँ, तो वहां पर जाने के बाद लाइक मुझे लगता है ऐसा कि अब बिल्कुल थका हुआ हूँ बहुत, अब कुछ नहीं हो पाएगा। बट देन आई स्टार्ट विद माई हारमोनियम, धीरे धीरे एनर्जी कम्स बैक, और करते करते उसके बाद जब सुबह उठता हूँ तो मैं पूरा फ्रेश रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से बेसिकली डिपेंड्स अपॉन आपको क्या अच्छा लगता है। ये सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो व्हाट यू लाइक। अब म्यूजिक में क्या है कि अब जैसे मान लीजिए शराब है या सिगरेट है, तो शराब सिगरेट किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट्स है, सब जानते हैं। बट ये क्या ऐसी लत है कि वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका कोई इसमें कोई हेल्थ में कोई आपका हैम्पर नहीं कर रहा है ना? तो तो बेसिकली सम सिगरेट विच इज डिस्ट्रेसिंग यू मे बी गुड फॉर टाइम बीइंग, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, जो कि हु कैन नॉट बेसिकली डेफिकेट ऑल्सो, जिनको बेसिकली सुबह में पॉटी जाने के लिए सिगरेट की जरूरत होती है। देयर आर पीपल आउट देयर, बट देन उससे उनको फायदा तो मिल जाता है, कोई परेशानी हुई सिगरेट पी लिया ठीक हो गया, बट वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। बट म्यूजिक ऐसी चीज है कि जब आप करते हो तो इट डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट। जैसे चैंटिंग अगर आप कर लेते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसी चीज कर लेते हो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इट्स म्यूजिक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन म्यूजिक करने का एक और फायदा है, इट कीप्स योर ब्रेन हेल्दी। कैसे? देखिए, किसी भी चीज को एक्सरसाइज तो हेल्दी रहता है। तो जैसे अगर मसल को आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल आपका ठीक रहेगा, उसी तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज है। कैसे? आप यहाँ पर एक बाजा लेते हैं, आप उसको लेते हैं, आपका उंगली यहाँ पर ऐसे ऐसे हिल रहा है, उसको आप बजा रहे हैं, इस कॉर्टेक्स में जा रहा है, उंगली जहां हिलता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फिर आप गा रहे हैं उसको, फिर आप सुन रहे हैं, तो टेम्पोरल कॉर्टेक्स में करीब करीब पूरा ब्रेन एक्टिवेट होते रहता है। और कुछ एरियाज हैं जो कि म्यूजिक के स्पेसिफिक एरियाज हैं, जो कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होते हैं, इधर और इधर, वो भी एरियाज एक्टिवेट होते हैं। आप देखते हैं वो आईज एक्टिवेट हो रहा है, तो इट्स लाइक एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन सबसे ज्यादा म्यूजिक में होता है, रिसर्च में ऑलरेडी पाया गया है। तो इसीलिए म्यूजिक थेरेपी का जो वैल्यू है, दैट्स मोर देन एनी अदर काइंड ऑफ अदर थेरेपीज और अदर रिहेबिलिटेशन। इवन रिहेबिलिटेशन में जैसे हमारे पास एल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास मेडिकल साइंस, डिमेंशिया, उसमें भी हम म्यूजिक थेरेपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मालूम है, आई नो वो आ रहे हैं अभी, जस्ट आई सी। तो बेसिकली सो इसीलिए म्यूजिक थेरेपी तो हरदम ही अच्छा है। और हम लोग म्यूजिक से हम लोग शुरू से जुड़े रहे हैं, एज ए विद्यापीठ, एज ए प्राक्तनी भी। लाइक हम लोग शुरू से म्यूजिक से, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो प्रेयर हॉल में नहीं चिल्लाता होगा। सुबह शाम तो गाना हर आदमी को गाना ही था। पुष्पेंद्र सबसे ज्यादा चिल्लाता था मेरे पे बगल में बैठ के बेसिकली। तो, तो सबको गाना, तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी चीज है कि वो हरदम फायदा ही देके जाएगी आपको, कभी घाटा में नहीं डालेगा म्यूजिक आपको। म्यूजिक करना चाहिए।
वो जो हमने जो भी सीखा है थोड़ा मोड़ा उसको लेके करना चाहिए, उसको बैठ के गाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ये करना चाहिए, दैट हेल्प्स. I think that answers your question, Mayank, or you want something else? Unmute yourself. You're muted, I think. Yes, Dada. Okay. That answers your question. You want something more? Yeah, definitely. दादा दिस इज विकास. दादा हाँ. मुझे पूछना था, सपोज किसी को स्ट्रोक आया है या नहीं, मतलब एज ए लेमैन कैसे पहचानेंगे हम लोग, और मतलब नहीं, उस मैंने समय बोला क्या था. करना चाहिए? यस यस, वही मैंने शुरुआत में बताया था. जैसे इसका निमोनिक है फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम. तो फेशियल डेविएशन होता है, आवाज लड़खड़ा जाती है, और जो है आर्म की वीकनेस हो जाती है, ग्रिप में वीकनेस आ जाती है. ये कॉमन है सिम्टम. लेकिन किसी को अचानक से अगर नहीं दिख रहा है अचानक से, तो ब्रेन का वो स्ट्रोक भी हो सकता है. किसी को अचानक से वो उटपटांग बोलने लगा, वो भी ब्रेन स्ट्रोक का केस हो सकता है. लेकिन कॉमनली जो होता है वो होता है एक तरफ कमजोरी आ जाती है शरीर में, तो एक फेस इधर मुड़ जाएगा, इस हाथ में कमजोरी आ जाएगी और एक पैर में कमजोरी आ जाएगी, आवाज लड़खड़ा जाती है, और उसके अलावा जो है चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, एक तरफ झंझनाहट हो सकती है, ये सब भी हो सकता है. कॉमनली यही सब होता है. लेकिन और भी क्या क्या हो सकता है? आदमी को दो दिख आ सकता है, देखने में समस्या हो सकती है, व्यवहार में समस्या आ जा सकती है. मैंने जैसा बोला कि जो ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होगा उस हिसाब से होगा. जैसे फ्रंटल लोब है, अगर यहाँ कोई इन्फाक्ट हुआ, ये इमोशन, ये फ्रंटल लोब जो है अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट, तो मरीज एकदम से ड्राउजी हो गया, वो भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बोल नहीं रहा है, तो उसको भी जो है बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है. दीज आर द रीजंस फॉर. पुष्पेंद्र, कुछ बोल के जाओ, कहाँ जा रहे हो? जा रहे भैया थोड़ा, अब थोड़ा गैंगटॉक आए घूमने, थोड़ा फैमिली को लेके बाहर जाना है. अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. कैरी ऑन. Dr. पुष्पेंद्र से तो बात होती रहती है. पुष्पेंद्र, Dr. Ujjawal, या I am Dr. S.K. Sena from the 1975 batch. So सर first of all, thanks for such a wonderful talk. सर A few queries. One thing is like you talked about multitasking, not to go for multitasking, because right now this is a very common thing. You will find everywhere people doing so many things at a time. So you told to avoid it. So why it is so? And the other thing is like you told about music for the for de-stressing. What about the visual treatments? If I enjoy any movie, is it going to help me? And then also like solving crosswords, solving puzzles. Is it also going to help me a lot? दादा देखिए, अगर अगर ये सब काम करने में आपको अच्छा लग रहा है तो आपको जरूर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, कुछ फायदा ही मिलेगा. क्रॉसवर्ड पजल करने से आपका कुछ पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं ब्रेन के, कुछ ये होता है, कुछ ये. म्यूजिक से थोड़ा फायदा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, आपकी एज यू आर ए डॉक्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली जैसे एक हारमोनियम हम लेते हैं, इसको हम हारमोनियम रख के यहाँ पर हमने रख दिया. अब देखिए मेरा ये हैंड उस हारमोनियम के जो है उसको पेटी को वैसे वो हिला रहा है, वो हवा भर रहा है. एक मेरा हारमोनियम, एक हाथ मेरा ये हो रहा है एक्टिवेट, मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों एक्टिवेट हो गया, मेरा ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया. मैं देख भी रहा हूँ, अच्छा मेरे पास कोई किताब भी है जिसको मैं गाना पढ़ के उसमें गा रहा हूँ, वो भी मैंने पढ़ लिया, उसको उसको पढ़ के उसके बाद मैं उसको स्पीच में लाया, उसको स्पीच में इंटोनेट करके मैंने उसको गाया, उसके लिए मेरा टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो रहा है. ऑक्सीपिटल लोब मैं देख रहा हूँ इसलिए एक्टिवेट हो रहा है. कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो कि म्यूजिक के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स, राइट टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन केस ऑफ अ म्यूजिशियन, लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन जनरल पीपल, वो भी एक्टिवेट होता है. उसके अलावा अगर बहुत अच्छा कोई गाना है, मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ, इमोशनल कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है. और इस तरह से करते करते करीब करीब ब्रेन एक सिस्टमैटिक वे में पूरा एक्टिवेट हो जाता है. मल्टीटास्किंग इसलिए अच्छी चीज नहीं है बिकॉज ये मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी जब वो चल रही है, जैसे कि एक मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अचानक से एक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट जाते हैं, फिर ऐसे करके वापस इधर आते हैं, फिर ऐसे लेफ्ट, तो उस केस में क्या है, गाड़ी के पहिए को और उसको बहुत दिक्कत होगी. दिस इज नॉट नेचुरल. म्यूजिक नेचुरल चीज है हमारा, हमें इंटोनेशन, हमें वोकल कॉर्ड्स मिले हैं बाय द सुप्रीम कॉर्ड, और वो हमें हमारी नेचुरल चीज है, बहुत इराज से म्यूजिक चला रहा है. लेकिन ये जो चीज मल्टीटास्किंग वाली चीज है, ये हम लोग लेके आ रहे हैं. इससे ब्रेन की एजिंग बहुत जल्दी होती है, ये बेसिकली रिसर्च में देखा गया है.
can just Google this on this thing. मल्टीटास्किंग एक्चुअली अभी रिसर्च है हमारे पास, इसका रिसर्च भी है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली एजेस द ब्रेन एंड डैमेजेस द ब्रेन एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कि दिस इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस. इसमें क्या डिफरेंट, जैसे आप एक हाथ से एक उसको बोल रहे हो तो एक दूसरे एक्टिवेट हो रहा है, फिर अचानक से आप इधर भी देख रहे हो तो वो सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा सर्किट एक्टिवेट हो गया. तो इससे क्या हुआ कि वो एक तरह का आप समझ, लाइक एक जैसे कुछ हम लोग कहते हैं ना कि गैसेस एक बंद कमरे में एक गैस उधर टकरा के उधर आ रहा है, एक गैस उधर टकरा के. इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म थिंग, इट्स नॉट ए प्रोग्राम्ड थिंग, इट्स बेसिकली एक तरह का हैप्पैज़र्ड काइंड ऑफ थिंग. ये चीज हो जाती है ब्रेन के साथ, और इस वजह से वो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाट साइंटिस्ट से. दिस इज बेसिकली एविडेंस बेस्ड. दिस नॉट दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस. दिस हैज बीन प्रूवन इन रिसर्च. दादा. Thank you very much, Dr. Ujjawal, for explaining it in such a nice way. उज्जवल दा, हाँ. बेसिकली हम मैं विक्रम, 99 आई रिमेम्बर यू वेरी वेल. कैसे हो तो विक्रम? बस ठीक ठाक। कहाँ दादा कहाँ? यो मैं दिल्ली में रहता, और अच्छा. और मेरी एक फरमाइश है, वो हमें शायद आपको भी याद होगा कि हमें शोले पिक्चर दिखाया गया था, और उसके बाद आके आप शिवानंद धाम में पूरे फीलिंग के साथ वो गाना पिया तू अब तो आजा, तो एक बार आप सुना देते तो बड़ा अ, क्योंकि गाना तो आप अच्छा ही गाते थे, चाहे डिवोशनल हो या फिल्म वाले, तो फिल्म वाले में थोड़ा ज्यादा मजा आता था, तो वो जरा तो आता ही है. तो थोड़ा नहीं नहीं सुना देते। नहीं, फिल्म में मेरा कहने का मतलब हरदम ये रहा है कि जो भी आपको अच्छा लगता है गाना, कोई डिवोशनल जरूरत नहीं है. आपको फिल्म का गाना अच्छा लगता है, उसमें आप इंजॉय करते हैं, उसमें भी इमोशंस है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी चीज है, कोई ऐसी बात नहीं. पिया तो अब तो आ जाएगा, सुना है? अच्छा ठीक है. जी पिया तू अब तो आ जा, शोला सावन बढ़ के आगे बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा. हा, 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 हा. मोनिका, ओ माय डार्लिंग. थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू. कैसे विक्रम, बाकी सब अच्छा चल रहा है? जी जी जी, कहाँ कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। कहाँ पे? मैं इधर मुनिरका के पास रहता। मेरे पास बेसिकली मेरा मैंने रूसी भाषा सीख रखा है, तो मुनिरका के पास ना? हाँ हाँ, तो कठवड़िया सराय? नहीं, मुनिरका मुनिरका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. वो सब आसपास ही है ना, कठवड़िया सराय, जी मुनिरका. जी 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 दिल्ली दिल्ली आईआईटी से जब उधर बढ़ते हैं तो उसके बाद वही सब आता है. राइट जी जी। राइट. एनी मोर क्वेश्चंस? कोई अगर अलग और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आई आई लव टू टेक दोस क्वेश्चंस. Hi, this is Manish here दादा, from 86 batch. हाँ, how are you? प्रणाम दादा. मैं हाँ, अच्छा हूँ प्रणाम दादा. यार. इनफैक्ट मैं तो थैंक्स बोलने के लिए फोन किया कि तुम लास्ट ईयर आए थे, और तुम्हारे आने से एक सेशन तूने बड़ा अच्छा संभाल दिया था. हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ से बाहर से आएगा. तो वो जो लास्ट ईयर सेंचुरी सेलिब्रेशंस में जी you जी. did a wonderful job. So I thought I will थैंक यू दादा. express my gratitude from all the Praktani side, from the EC, and he was listening to you. Very wonderful talk you had, and impromptu तुम अच्छा गाना भी गाया, पिया तू आजा. Wonderful. Looking forward to meeting you in Kachi or sometime in Vidyapit. एकदम दादा. चलो उज्जवल, thank you so much. Have a थैंक यू nice दादा. year ahead. ठीक है. थैंक यू दादा. हाँ Okay. भैया भैया Thanks. एक क्वेश्चन हाँ, भैया सचिन अभी। प्लीज. हाँ भैया, अभी हम एम्स भुवनेश्वर में फाइनल ईयर में हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। यस दादा, बताइए. भैया हाँ हम बताइए. हम ऑर्थो और जनरल सर्जरी को लेके कंफ्यूज है, उसमें पूछना था। सो यू हैव इफ एप्टीट्यूड तुम्हारा अगर सर्जरी का है तो दो है इसमें कहानी. अगर तो तुम एक्सेल करना चाहते हो एंड यू वांट टू स्टडी मोर एंड मोर
तुम्हारे पास एनर्जी पूरा है, एंड यू आर लाइक, तुम्हें इंटरेस्ट अगर है कि आई हैव टू डू एब्डोमिनल सर्जरीज, बड़े बड़े काम करना है, यू आर वर्क रेडी टू वर्क फॉर एकेडमिक्स एंड योर परस्यू योर सर्जरी, अगर ये तैयार हो करने के लिए, एकदम लड़ने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए, और 10 से 12 साल यू आर अभी से यू आर रेडी टू डू दैट, तो बिल्कुल यू गो फॉर जनरल सर्जरी, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुके नहीं, मतलब अब सोच रहे हो कि यार जल्दी से अब खत्म हो ये, है ना, जल्दी से इसको ये करना है, तो ऑर्थोपेडिक्स इज अ गुड ऑप्शन। ऑर्थोपेडिक्स में क्या है, ज्यादा नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स 1-3 साल करने के बाद यू कैन डू सब छोटा सा फेलोशिप एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। लेकिन अगर इफ यू वांट टू एक्सेल, बहुत बड़ा सर्जन होना चाहते हैं ये वो, तो ऑर्थोपेडिक्स का अपनी लिमिटेशंस है, वो हड्डी जोड़ तोड़ ही विभाग है, उसमें उसका लिमिटेशंस है अपना, उसमें कोई बहुत बड़ी ब्रेन की सर्जरी या फिर बहुत बड़ी कोई जो है डायग्नोसिस या बहुत बड़ा कुछ आप बहुत भयंकर नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, स्पाइन में जा सकते हैं, आर्थ्रोस्कोपी वगैरह है, उसमें भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट थोड़ा सा डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे भी। आई हैड द सेम इंटरेस्ट, मेरे को बहुत ज्यादा जनरल सर्जरी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने सर्जरी ले लिया था। बट जब मैं वहां पे गया, तो उसके बाद जैसे तुमने एक सवाल पूछा है ना, मेरे लिए सवाल बड़ा डिफिकल्ट था, मैं बहुत लोगों को पूछा और मैं कंफ्यूज ही रह गया लास्ट तक, एंड देन आई डिड सर्जरी फॉर सम टाइम एंड देन आई लेफ्ट दैट, एंड देन आई ज्वाइंड इंटरनल मेडिसिन, क्योंकि मेरा भी क्लियर था ये कि मेरे को कोई एकदम भयंकर ऐसा ब्रांच में नहीं जाना कि हाँ खत्म मेरे को कर देना है 2-4 साल में, ऐसा नहीं था मेरा। मेरे को करना था, आई एम रेडी टू वर्क फॉर मे बी 10 ईयर्स 12 ईयर्स। तो उस समय 2008 की बात है, तो 2007 की बात है बल्कि, तो आई वाज रेडी फॉर 10 ईयर्स, वर्किंग 10 ईयर्स। तो बेसिकली तो मैं आई टुक, पहले सर्जरी लिया, मेरे को कि सर्जरी, मेरे को लगा कि सर्जरी विल बी लाइक, मेरे को अच्छा लगता था सर्जरी है वो, व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, बट देन जब मैं उसका अंदर गया है सो कि नहीं, तो आई थॉट कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तब मैंने छोड़ के आई ज्वाइन इंटरनल मेडिसिन एक्चुअली। पहले मैं मौलाना आजाद में सर्जरी किया हूँ ऑलरेडी कुछ दिन तक ट्रेनिंग, उसके बाद में फिर छोड़ के आई ज्वाइन यूसीएमएस में एमडी मेडिसिन, और उसके बाद फिर न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट आया तो न्यूरोलॉजी किया। सो एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, अगर तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक्स में है, यू वांट टू गो फॉर आर्थ्रोस्कोपी है, तो उसमें जाओ। और थोड़ा सा थक मतलब लग रहा है कि अब यार कितना और पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा काम और करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कितना अंडर किसके अंडर करेंगे, तो डेफिनेटली जनरल सर्जरी का थोड़ा ज्यादा है लर्निंग कर्व और लर्निंग टाइम। और जनरल सर्जरी में आपको डेफिनेटली एक एमसीएच करना पड़ेगा, इसके बाद एमएस सर्जरी करने के बाद एक एमसीएच करना पड़ेगा, हो सकता है एमसीएच करने के बाद फिर आपको 3-4 साल और कहीं काम करना पड़े, तो लाइक इट्स 3 इयर्स एमसीएच, एक 3 इयर्स एमसीएच, उसके बाद मे बी 3 इयर्स पोस्ट एमसीएच, मे बी 3 इयर्स, अनदर 3 इयर्स, और 1-2 साल और एडजस्ट होने में, तो मे बी 10 इयर्स के आसपास मान के चलिए यू विल टेक। बट ऑर्थोपेडिक्स में क्या है, मे बी 3 इयर्स में आप करेंगे, और 1-8 साल कहीं फेलोशिप किया आपने, 4 साल 5 साल में यू विल बी लाइक, तो डबल करीब करीब हो जाता है, ये चीज है। बट देन एक वैल्यू है, एक गैस्ट्रो सर्जन की वैल्यू डेफिनेटली एक सोसाइटी में ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज्यादा है, एक गैस्ट्रो सर्जन की, न्यूरो सर्जन की, या फिर और भी जितने भी सर्जन जो भी सुपर स्पेशलिटी हैं सर्जरी फील्ड में, उसकी वैल्यू डेफिनेटली एक एक जनरल पब्लिक में, अरे ये तो हड्डी जोड़ तोड़ डॉक्टर है बस, ये कोई आंख का डॉक्टर है तो आंखी का है, आंखी तक लिमिटेड है, बट एक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आपका थोड़ा स्पेक्ट्रम खुल जाता है, ये चीज है। ठीक है, थैंक यू। So Dada, should we wrap up the session? Definitely. So I'd request if anyone has any questions. We will wait for 2 more minutes for your questions. Yeah. उज्जवल, रितेश दा है दादा। हमने प्रॉमिस किया था कि तुम एक सरप्राइज न्यूज दोगे, तुम्हारे जो लास्ट हिंट देता हूँ, साधना सरगम, तो इफ यू वांट टू अनाउंस, एंड फरमाइश की तरफ से तुम्हारा जो भी फेवरेट सॉन्ग है, मे बी डिवोशनल और मूवी का, यू लाइक टू लिसन टू योर, यू नो, the gift you have got and you still practice, anything you wish like for us, please. सो कल मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सिंग मोहम्मद रफी टुडे।
I would just lay on the track, karaoke track, and I would sing on that. That would be easier for me. Sure, Dada. जस्ट आप लोग ये खाली बता दें कि ये बैलेंस ठीक है कि नहीं ट्रैक का उसका. ओके दादा. दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो. बैलेंस ठीक है ना? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है. राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है. पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है. हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है. ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है. राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. थैंक यू वेरी मच. अमेजिंग दादा. अभी क्या है, क्लिनिक में ज्यादा कहूंगा तो बाकी लोग समझेंगे. सभी आ जाएंगे दादा फिर साहब. डेफिनेटली घर पे रहता तो इट हैड बीन इजियर फॉर मी. अभी क्लिनिक में थोड़ा बट फिर भी दादा बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So thank you, Dada, for that amazing session. Today we have with us senior Dada, Manish Pirdarsi Dada. Dada, I would request you to kindly wrap up this session with your kind words. Manish Da, are you there? Yeah, just a second. Sure, Dada. Hi, thank you so much for giving me this opportunity to extend my vote of thanks for the session. I'm again grateful to all the participants, and Ujjawal, the fact that you mentioned about music, and we are lucky that we in Vidyapeeth, all of us had music as our subjects, you know, like one of the still class 6, class 4, 5, 6. Akhilda, I think you were also his student. So Yeah. we had this Akhilda and Moranida team, which taught us music. At that point of time, we didn't realize that, you know, we are having a glimpse of one aspect of life which is going to have play an important role. And I'm very happy that you have kind of continued with your music part, and you have been one very inspiring Praktani. On behalf of all the Praktani, I extend my gratitude to you and wish you all the best for your endeavors.
looking forward to meeting your active participation in our next Praktani meeting. Thank you so much. Thank you, Dada. Thank you, Dada. Thanks, everyone. Thank you, Dada. Happy New Year in advance. Thank you to all of you. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Have a nice time. May the New Year be wonderful for all of us. Sure. Thank you. Thank you, Dada. Thank you, Dada. Bye. Thank you, Ujjwal, and thank you everyone for joining us.